करते जाएंगे. So this is the intuition around it. It's called KMP search. इसको अभी fully understand करना है मैंने without building a table of all the good prefixes and then comparing. उसके डिस्कस कर बगैर. सकते हैं। जी. आई मीन मेरे जहन में है, मैंने अभी उसको एग्जीक्यूट तो नहीं किया, बट आई कैन डिस्कस कि मेरे जहन में इसके क्या अप्रोच आती है। जी. आप मुझे राइट्स दीजिएगा ताकि मैं एक्सप्लेन Okay. कर पाऊँ। Yeah. Yeah, you should be able to now annotate on this. ड्राइंग्स क्लियर कीजिएगा प्लीज। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास जो है वो हम इस पूरी अरे में सिर्फ वन टाइम ट्रैवर्स करेंगे। अ, जो पहली अप्रोच थी उसमें, और पहले मैं उसमें डिफरेंस बता दूं ताकि आइडिया हो जाए कि पहले क्या हो रहा था और मैं क्या करना चाह रही हूँ। हम लोग पहले ये कर रहे थे कि जितनी इसकी लेंथ है ईच करेक्टर पे हम उतना चेक कर रहे थे, यानी हम एस के लिए भी एस ए डी ये 3 करेक्टर का चेक कर रहे थे। फिर दोबारा हम ए डी बी कर रहे थे, फिर बी के लिए बी यू बी डी यू कर रहे थे, और इस तरह हर एक के लिए हम कर रहे थे। तो इस तरह हमारे पास हम जितनी हे स्टैक की टाइम कम्प्लेक्सिटी है मल्टीप्लाई बाय जितनी हमारी नीडल की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इतना हमारा सोल्यूशन चला जाता है। और जो हमारे पास वर्स्ट केस में हमने देखा कि दोनों की लेंथ इक्वल भी आ सकती है, तो उस सिनेरियो में अगर हमारे पास ये जो है वो एन स्केयर में चला जाएगा, एन स्केयर टाइम कम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा, जो कि एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि अ, हम लोग हर एक इस पूरी अरे पे सिर्फ एक ही दफा इटरेट करेंगे। और वो किस तरह करेंगे कि पहले हमने पहला करेक्टर मैच किया एस का नीडल का और इसका करेक्टर मैच किया, तो ये हमारे पास मैच हो गया। अगर उसके बाद हमने इनका दूसरा करेक्टर मैच किया, इसके बाद हमने तीसरा करेक्टर मैच किया। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, इस रिप्लेस कर रही हूँ सैड को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता है आर ए डी, राइट। ये मैंने सिर्फ जो है ये न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है। तो क्या करेगा कि पहले करेक्टर मैच करेगा एस के साथ, पहला करेक्टर मैच हुआ है या नहीं, तो नहीं हुआ। तो इस सिनेरियो में ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा, ए को मैच करेगा, ए मैच एस के साथ मैच हुआ है, नहीं। डी को मैच करेगा, नहीं हुआ। इसी तरह ये नेक्स्ट बी को मैच करेगा, फिर यू को मैच करेगा, फिर टी को मैच करेगा, फिर दोबारा से ये एस पे आ गया। यहाँ पे इसने इस एस को और इस एस को मैच किया है। इस सिनेरियो में अब ये जो है वो यहाँ से भी हमारे पास ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ए पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए मैच होगा, राइट। और अगर दोनों करेक्टर मैच हो गए, ठीक है, फिर तीसरा करेक्टर मैच होगा और यहाँ आ गए हम। तो हम यहाँ पे ये वाला जो जितनी इसकी लेंथ होगी हमारे पास जितनी इसकी लेंथ होगी, अगर हम माइनस कर देते हैं अपने ये करंट पॉइंटर का जो भी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका आ गया है 10। अभी हमारा राइट पॉइंटर जो है वो यहाँ पे था, तो 10 - 3 7 आ जाएगा। तो हम 7 जो है यानी राइट माइनस लेफ्ट पॉइंटर करके तो हम 3 जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसको इस तरह सिंपलिसिटी से अगर हम सॉल्व करें तो लूप जो है वो सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा और हमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है और ना कुछ भी मूव करने की जरूरत है। हम लोग अपना ये वाला इस इधर पॉइंट लूप एग्जीक्यूट करेंगे और इसका सिर्फ फर्स्ट करेक्टर जो है वो अपने नीडल के फर्स्ट करेक्टर से मैच करते जाएंगे। अगर मैच हो रहा है तो हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमने क्योंकि फर्स्ट रिटर्न करना है अक्रेंस, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस। तो जैसे ही हमें ये मिल जाता है तो हम अपना लूप वहीं पे स्टॉप करके तो नेक्स्ट
चेक भी नहीं करेंगे। मेरा मैं ये सोच रही हूँ, मेरे जहन में ये सोल्यूशन है। मैंने भी ये वाला सोचा, मिड ऑफ द डे मेरे जहन में ये आया। तो बेसिकली, करेक्ट मी इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली। तो आप एक पॉइंटर जो है तो हेयर स्टैक पे चला रही है, एक नीडल पे चला रही है। जब आपको एस मिलता है देन यू ओनली लुक फॉर ए एंड डी, राइट? इफ नॉट देन जी। यू रीसेट योर पॉइंटर ऑन द नीडल टू जीरो। हम लोग जो है वो यस, हम एक हेयर स्टैक पे पॉइंटर चला रहे हैं, एक नीडल पे चला रहे हैं। अगर तो हमें हेयर स्टैक में मिल जाता है नीडल का करेक्टर, तो हम दोनों को जो जो हमारा हेयर स्टैक है इसका पॉइंटर 1+ होता रहेगा। लेकिन हमारा ये वाला जो है, अगर जैसे ही इसको दोनों इक्वल ना हुए, तो ये हमारा पॉइंटर जो है वापस से रीसेट टू जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टिल ऑफ एंड क्रॉस है में, क्योंकि आप, नहीं, भाई, नहीं, ये you are ओ again building entire needle, right? You're checking the entire needle every time. नहीं, पहले Fine. वाले में क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ इसे थोड़ा सा बड़ा करके। पहले हो रहा था SAD, पिछले वाले सोल्यूशन में SAD, BUTSAD। तो हम पहली उसके लिए इस तरह चेक कर रहे थे, फिर इस तरह चेक कर रहे थे, ओके, फिर इस तरह चेक कर रहे थे, फिर इस तरह चेक कर रहे थे, ओके। ये जो हमारा पहले वाला सोल्यूशन था, अगर आप कहते हैं तो मैं वो सोल्यूशन ओपन कर लेती हूँ। वो उसमें हम हर करेक्टर के लिए आगे नीडल का सबसेट मैच कर रहे थे। यहाँ पे हम हर अक्रेंस के लिए नीडल का सबसेट मैच ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ वन अक्रेंस के लिए उसका उसको मैच करेंगे। हम क्या करें, उसका पहला करेक्टर सिर्फ मैच कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग अगर 10 10 रेज टू पावर 4 तक आती है, तो हम, आप क्या कर रहे थे कि हर इस एस के लिए, ए डी, हर करेक्टर के लिए आप सब स्ट्रिंग मैच कर रहे थे। यानी मैच कर रहे थे सेड, क्या पहली अकरेंस के साथ आगे ये एग्जिस्ट करता है, फिर ए बी डी क्या है, क्या फिर बी यू टी है। इस तरह करके आप स्लाइसिस बना के चेक कर रहे थे। अपना पुराना कोड अगर आप खोलें तो उससे आपको आइडिया होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें पूरा स्लाइस चेक करने की जरूरत ही नहीं है हर अकरेंस के लिए। और अगर आपके पास मल्टीपल एस हो, एस 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 ए डी। तो कोई बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं और मैच करते हैं, ठीक है। और अगर मैच हो गया तो हम दोबारा से जो है वो हम ए पे आ रहे हैं, सेकंड लेटर पे, अल्फाबेट पे आ रहे हैं। सेकंड अल्फाबेट एस से मैच ही नहीं करेगा, और ये डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये बात है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें एस अपना राइट दोबारा से मूव करना चाहिए नेक्स्ट, या हमें उधर ही स्टॉप करना चाहिए और रीसेट कर देना चाहिए। तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट किया है। मेरे अकॉर्डिंग फिर हम ये कर सकते हैं सिर्फ उस सिनेरियो में कि हम अगर वो मिस मैच हो गया तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स भी साथ मैच कर लेंगे, कहीं उससे मैच तो नहीं कर रहा, ताकि दोबारा से हम जो है वो लूप स्टार्ट कर सकें, अपनी मैचिंग स्टार्ट कर सकें। बस उसमें ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सारे अल्फाबेट 1 बाय 1 यानी O(n) टाइम बस होगा। और ये वाला जो मैचिंग वाला ऑपरेशन है ये कांस्टेंट चला जाएगा। For every O of n, you're checking possibly you'll end up checking the entire needle minus one, unless it's matching. क्योंकि लेट से आपके पास लास्ट करेक्टर नहीं मैच हो रहा, डी नहीं मैच हो रहा, बाकी एस और मैच हुआ, एंड इमेजिन इफ यू लाइक ये तो लास्ट। सिर्फ वन टाइम मैच होगा ना सर, ये पूरी उसमें सिर्फ वन टाइम मैच होगा, क्योंकि ये वन टाइम में ही हमें जैसे ही फर्स्ट अक्रेंस हमने मिली हमने रिटर्न कर देना है। वो तो हमें एक टाइम जब मिलेगा तो वो तो हैप्पी केस सिनेरियो ना। इन द सैड केस सिनेरियो, वी आर मेकिंग iteration across needle which is, let's say, the length is हम of लूप m. इसकी तरफ इसकी दफा रन कर रहे हैं, लूप इसकी दफा रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इसको इसमें हम सिर्फ अल्फाबेट को मैच कर रहे हैं। अल्फाबेट मैच हो किस तरह रहे हैं सिर्फ इसी सिनेरियो पे, ये तो इफ कंडीशन में हम वो लिखेंगे, तो ये तो कांस्टेंट ऑपरेशन होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग डिफर कर सकते हैं।
अगर मेरे पास एस और ए मैच हुआ और मेरे पास डी मैच नहीं हुआ, इन दैट केस शुड आई मैच, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम ए इन द haystack and नो, reset my needle? I should अगर move. आप क्या कह रहे थे, कहाँ पे मैच नहीं कर रहा? डी मैच नहीं हुआ ना? डी डी पे मैच नहीं हुआ, तो फिर तो हमें क्या ठीक है, करना अगर है? डी वाला मैच नहीं हुआ तो जहां पे भी डी होगा हमारे पास, उसके बाद ये वाला जो है, ये स्टार्टिंग, हम साथ ही ये स्टार्टिंग भी चेक कर लेंगे कहीं ये दोबारा से शुरू तो नहीं हो रहा है इस पॉइंट से। अदरवाइज इस वाले लूप में तो उसको +1 कर ही देंगे। इस वाले में जो है इसको रीसेट टू जीरो कर देंगे। अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो फिर भी रीसेट टू जीरो कर देना चाहिए। तो हम डी के बाद फिर बी यू टी को चेक करेंगे, लेकिन लेट से अगर हमारे पास एस ए एस बी यू टी एस ए डी होता, अम, बल्कि जो डी बी यू है इसकी जगह हमारे पास सैड आ रहा है, राइट? तो मैं फिर एस को स्किप करूंगा, अगेन मुझे वो स्ट्रिंग मिलेगी नहीं। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, मैं थोड़ा सा कंट्रोल ले रहा हूँ। ओके। एस ए, ओके, एस ए एस ए डी, हम्म। और ये बाकी वाला ऐसे ही लिख लेते हैं एस ए डी। ठीक है, हमें फर्स्ट अकरेंस चाहिए। ओके। तो आप ये कह रही हैं कि हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे मैच हुए, ठीक है, कोई मसला नहीं, आगे चलो, मैच हो गया। अब यहाँ पे मैच नहीं हुआ, राइट? ठीक है। तो एग्जिस्टिंग रूल के मुताबिक हमें इसको स्किप कर देना चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि हम साथ ये भी चेक करेंगे। अगर जिस सिनेरियो में मैच नहीं हुआ, हम साथ देखेंगे कहीं ये फर्स्ट अकरेंस के साथ मैच तो नहीं कर रहा। ये भी कंडीशन होनी चाहिए। ओके, लेट्स से फर्स्ट अकरेंस के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं, और हम यस। यहाँ से बिल्ड कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो अब इस केस में हमें 2 इटरेशंस में हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन इन केस एस ए एस ए एस ए एस ए डी, इस केस में हम इसको बार बार रीसेट कर रहे हैं, यहाँ तक चेक करते हैं टोटल लेंथ इसकी। इसमें तो लूप वन टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना। कंडीशन तो हम अल्फाबेट अल्फाबेट को मैच कर रहे हैं, हम अरे के स्लाइसिस को मैच नहीं कर रहे। अल्फाबेट्स को मैच कर रहे हैं, एंड दिस इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ, इट्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट एवरी बैड करेक्टर, एवरी रॉन्ग करेक्टर। और यहाँ पे चले अगर हम ऑफ एनी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे पास, मुझे चेक करनी पड़ती है ना, मेरी इंटेंशन होती है कि मैं पूरी स्ट्रिंग को मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सर ये उसी लूप के अंदर काम हो रहा है और ये कंडीशन के अंदर काम हो रहा है। इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन का टाइम कांस्टेंट टाइम होता है, वो कांस्टेंट ऑपरेशन होता है। हम्म, ओके, वी कैन ट्राई दिस। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैंने सोचा, और एक्चुअली आई चेक्ड इट विद जीपीटी एज वेल, माय एंटायर इम्प्लीमेंटेशन। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि ऑफ एम, एम क्रॉस एन है। बट ये, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, यू वांट टू राइट पाइथन कोड? नो सर, मैं इसको अलग से लिखूंगी ओके, तो फिर मैं उधर शेयर कर दूंगी। ओके, नो वरीज। Anyways, this still needs more clarification, so तो देखते हैं कोई, आप में से कोई और अगर क्वेश्चन भी प्रेजेंट करना चाह रहा हो, कोई भी इजी वाला क्वेश्चन। नो? Okay, then let's go to some random question. See what that is.
Okay. I hope this is not a bit manipulation. Given two binary strings, A and B, return their sum as a binary string. So A is equal to 1, 1, B is equal to 1, and the output is 100. So how do we convert this to a binary string actually? 1010 and 1011. Return their sum. Sum is, I think, OR operator or XOR operator. Um, I believe it's going to be, let's see, we want to return this, right? 100. It's not 100, it's 100, right? So if these are binary numbers, right? If these are binary numbers, and if you're taking OR operator between them, um, 1 and 1 are 1 and again 1, but that doesn't give me 100. Um, unless I have something like this. Return their sum I as think binary string. they are adding their hexadecimals, their decimals. Like B is 1 and A shows 3, I guess, or 2. Not sure. Hexadecimals. Yeah, so it's A will be 3, right? So 2 raised to power 0 will be 1 and 2 raised to power 1 will be 2. So 1 1 means these two bits are open, so it will be 3. And B is 1. So 3 plus 1, 4. And 4 can be represented as 100 in binary. I think that's what they have done. So Okay. if you complete that sequence like 2 raised Zero, to power zero, 1, and 1. Yes, you're right. 2 power 0, 1 and 2. So yeah. these two get ignored and this work. Brilliant. Okay, so I guess we have to take iterate from the opposite side, take each string character, convert it into integer, but then we need to have equivalent some measure of base 2 with the power increasing. This we can do like count, and we can keep increasing this count and keep um, multiplying by the power and adding to the next 2 count plus 2 until we reach the end of this string. This should give us the um, and then how do we convert this to, we have a function in Java that converts uh, integer to binary string. So as long as we can compute this integer, for example, in this case 4, we can directly convert into binary string. You don't have to go through that painful process. But what is going to be the approach to get this? So let's say I have to compute this and I have to compute this. Okay. And then I have to add these two. Right. So let's say if I'm taking 1, okay. Initially my power will be 0. But how do I multiply 2 power 0? How do I do this, compute this power? We can just simply use math.power, and then we can keep increasing the power by 1 and keep computing it over and over again. So there is math.power. We put our uh, number 2, and then we keep increasing its power, right? This will be the actual power. And every time we do, we increase power plus equal to 1, right? And where do we apply this? We update a certain variable x. You input this method right here. And when we have x in the next iteration, uh,
If it's 1, then we compute this increased power. If it's 0, we disregard it. Then once this iteration is ended, we have the number. Let me try it again. Okay, so I will take an integer power, okay? And then with each iteration that I'm going on the opposite side, I check if this string is 1. If it's 1, then I do power plus 1. Initially, it will be power plus 0, right? So, and the next iteration will be power plus 1, power plus 2, power plus 3, okay? And so if initially the power is 0 itself, if I keep adding this by 1 at every iteration, can I say that eventually I'll reach at power is equal to 3? Yes. If that's the case, I can add it to a function math.pow and just put a constant 2 here. Okay. And whatever the result is out of this function, I keep storing it in X, but in the next iteration, it has to follow something like this. And once all of these iterations are done, as part of the loop for B and for A, then I add, let's say I've done this for A, right? I need to be doing same for, oops, it's all A, sorry. I need to be doing same for B. And once I have both A and B with the same process, I can just sum is equal to A plus B, and we can return the sum after converting it to binary string. Okay, let's give it a try. Okay, so we have two strings A and B. Should we run separate loops? Can we do it in a single loop with two different pointers? Yeah, we can. So if the pointer for this has already reached, we'll take this example. Pointers start both at the length of string -1. They both move parallelly, right? And as they keep moving parallelly, let's say we end it for B. So we should stop for B somehow. And we can put a condition for this that if the length for B has already reached its limit to 0, we don't iterate for this anymore. We just iterate for this. So we need a common condition. But let's do it simply first. Let's run separate loops for this. I'll compute B first, A first, and then add them. And then we can optimize it into a single loop. Okay. All right. So where should I start? First, I need to figure out the, let me see, integer sum is equal to math dot power 2. Let me check if I'm writing this function correctly. Math dot power function job. I think it's lowercase. Yes, it's lowercase. And I need a variable named power, integer power, that's equal to 0. I put my power here. Okay. And I have to, just for simplicity, x is equal to 1. Okay. Let's make it 0 as well. So initially only it will be 0. Okay. And I'll run loop in the opposite direction, right?
because 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3. That's how it works. So for integer ITR, let's see, for integer ITR is equal to b dot length minus 1, and ITR is greater than or equal to 0, ITR minus minus, which means it's going to go in opposite direction. And as it's doing this at every iteration, we don't need this. We can do just power plus equal to 1. Next time it will have a bigger power. Initially it will be 0, right? And as I keep moving, I'll keep adding the power and keep adding the sum. So integer sum should be declared here before ahead of time, equal to 0, and let's do it like this. So the older sum will be added, and that's how I will arrive at the sum A. Let's make it sum A, sum of A and power plus 1. And once we've reached that end, we can simply safely say that we have arrived at this number conversion of the A or B. This is something we did for B, sorry. So we need it for A as well. We need it for A as well. Okay. Let's do it for A as well. Change this A. Okay. This one thing missing is the conversion. Okay. So conversion and conditions, right? So what we'll do is we'll do conversion only. Okay. So what we'll do if the ITR, sorry, what is the name of the string? B dot character at ITR, B dot character at ITR is equal to, because it's a string, right? Equals the, that's representation of 1. Then only we will increment it, else we'll continue, we'll ignore it. Let me reformat this code. Okay. And finally, when this loop ends, we should have the sum of B, and we should apply this as well. Just this condition. Control C, we'll make this for A, right? And close this bracket as this. And, okay, cool. And finally, when we have both of these, what we can do is we have integers, right? So sum of A and sum of B are integers. So what we can do is we can do sum of A plus equal to sum of B, and then we can convert to converting integer to binary string in Java. I'll just use an is the method, otherwise we'll have to break back again, dividing by some, I think 2, dividing 2 and then taking remainders and converting them to the string. So I don't want to do that. So simply what we can do is we can do integer to binary string, right? And we need to return a string. So string binary is equal to integer to binary string. Let's do it like this first, and then
we can do something like binary is equal to integer class to binary. Oops. To come on. To binary string and underscore a. And we return binary. Okay, let's take a look at this. If it works. B.length. So there's this missing because for string we need to put these here while we're trying to calculate the length on a keyword. dir dot equals character 1. Oh, okay. So this function cannot call this function. Can we just directly do something like this instead of using calling one method from another? Okay. Why is it failing? So for A and B, this output is 111. Why is it not 11100? So anytime we encounter A1, actually what we're doing here is for zeros, we are not counting these power of twos, which is not right. If it is a 0, we should still increment the power, right? Because if I'm going in this direction, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, at least the power increments. So we can do else, just increment the power and don't compute anything. Maybe that's why. Okay, still not happy. Why? 10101011. The output is 011. Expected is 10. Where am I going wrong? I'm starting with the last and greater than or equal to and subtracting the iterator. If I'm seeing a 1, then I'm computing the power. Initially, my power is 0, so 2 power 0 is 1. That's my initial sum, regardless of if it is 1 or 0. Okay. And if it is not 1, then it is 0. In that case, I'm still computing the power. The power should start with 0. What if we have a 0 here? In that case, what are we doing? If I have a 0 here, I'm just incrementing the power by 1. That sounds right, no? Okay, maybe something happening here. Let me try this, shall I? Integer answer is equal to 0. I mean, this shouldn't make a difference, but I just have a little bit down.
Maybe that's what's causing it. Is equal to this, and let's return this. Let's try again. Nope. That's not going to change anything. A dot length and B dot length. So what is the answer we're getting? For this, the expected is 1, 0, 0, is 4. But instead I'm getting this, which is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 4, 5, 6, 7. I'm getting 7. Why? I think extra ones are being calculated for no reason. Maybe it is due to the addition that we're doing during the looping. If I have found a 0, 2 power 0 is 0. Next time, when I come and I'm trying to look at this, 2 power 1 is 2. So now 2 plus 0 is 2. Okay. And then I'm doing same thing here for B is 1. The length is 1. If it is 1, 2 power 0 is 0. This should be 0. But why is the power increasing in all cases? What if there's only one string? And what am I doing with this power? Just increasing it. This should increase before we compute this. But what if it doesn't even come to the next iteration? Creeping in the dark. Okay, there's some कुछ हरकत हुई. 1110. No, no. What can we possibly be doing wrong here? Let me do a quick syntax check. Um, syntax check. No, this is wrong. You don't want to increment power at the first iteration. It defeats the purpose, and am I doing something wrong here? That's wrong. Okay.
No, it's returning 3 ones. Mm. Oops, what's going on here? Support visualization. Anyways, the problem here, 2 problems we got was this returns a double value, but we want to keep it integer. And second, we had incremented the power, but we never reset it. After this, the power comes from this function itself, and we're reusing that power. So we are just uh, computing a completely different number over an existing power. So that's a problem. But why is it failing this time for the rest of the test cases? Probably it's failing because we need to use, when converting to the binary string, we need to string builder instead of this binary. It's because if you see, it's giving a smaller output, right? So string can only store so much, right? Uh, what we can do, I think, is use um, we pull up the string builder. So finally, we do the from right to left. Let me try this. String builder binary is equal to new string builder. What if we submit it now? For large inputs, it's failing and it's still failing. What's wrong? Well, this will not work. So, okay, that's where the problem is. We cannot set binary. Binary does not exist, right? And but how we convert it to a string? Mhm.
But now we're returning the binary. We're not adding anything to the binary. Binary.reverse.string. This. Okay, no, of course. Well, we need to take a look at this one as well then. With string builder, it's going to be different. We can't just use that function to convert an integer to a reverse string, integer to a binary string. But there are other ways to do so. But yeah, you can use bit shifting as well for this. Yeah, that's all. Probably the problem is like I think bits overflowing, because if you go Yeah, to the constraints, like the B length, it goes like till 10 raised to the power 4, right? correct. So integer, long, your strings, they cannot handle all these bits, Yeah, right? So string yeah. builder can, but the method is a little bit different when it comes to like storing the calculations. Which I wish we had time for. We could have explored that as well. Mm, But the easiest way would be to use bit manipulation, keep bit shifting, and keep calculating in that way. Store into integer and then convert it. But well, we'll see. mm. Okay, thank you everyone. Thank you. Session. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर, एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद तला, आपने बहुत अच्छा समझाया। तो Thank you. फिर हम आज का सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Allah.